Good evening, everyone. I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak Civil Services, where we are going to continue with our series of current affairs. And in this particular class, we are going to discuss the weekly current affairs. I mean to say that the current affairs which is important from the examination perspective, which we have already covered in our previous classes, but we need to revise it. So in this particular class, we are going to have a thorough revision of all the current affairs which have been discussed in the previous classes. I would want your attention, I would want you all to please pay attention to all the current affairs, because on Monday you will be having a test based on them, right? These current affairs, based on them, you will be having a test. A very good evening, Sachin. A very good evening, Sonuji, Surya, Harshita. A very good evening. And it's a request to each and every one of you to please share these classes on whatever platforms you are connected with your friends to, be it WhatsApp, be it Telegram, be it any other social site. Please share these sessions so that they all can also join in. A very good evening, Harshita. Okay, and if you haven't subscribed to Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English YouTube channels yet, then please subscribe to them too for further class notifications and further classes updates. Okay, moving ahead guys, बताते हैं आपको आज की क्लास की जो भी मेन सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ that from the morning session also we are left with some of the few headlines, right? So we are going to have a look at them too, and then we are going to continue with the revision series, right? But with the first news affairs only, I will be treating it in a revision format only. We'll be taking it very quickly, okay? Yes. So the first news, we all have seen that in space at Bhopal, Ahmedabad was inaugurated, right? It was done by, it was launched by PM Narendra Modi ji, and he said that in space, you will be getting in for space, you will be getting in for pace and ace. तो अभी इससे आपको जो एक चीज ध्यान रखने की है वो क्या निकल के आती है हमारे पास में, just please take in mind, it is space, pace and ace. So basically this is the crux. Basically this is the crux. The Indian government is doing initiative to bring private sector in the space education and space research, because we all know that the government is rarely in the private sector is rarely involved in any concern associated with these space studies, space researches and launches. So now what the Narendra Modi is saying, as the youth is now a part of the private sectors are developing and the youth is also concerned with them. So what they want innovation, they want youth participation, young blood in the developing fields. So in tech sector, he believes that the Indian government would be now boosting up the private sector for the space education, where you can do the launching, you can come suggest for your missions if you have any great mission or any other studies that you have done. So you can all connect via this one platform that is being named as InSpace, IN Space. So first let's understand the full form of IN Space, that is Indian National Space Promotion and Authorization Center. At where? Bhopal. It's Bhopal, B-O-P-A-L in Ahmedabad, right? So this is a one major point that you need to keep in mind. Also, you can just consider this point important too, that the private sector companies working in the field of space-based applications and services will be promoted. We will be exchanging the data with them. So this is also an important point. Later on, it is an opportunity for India's talented youth to share their views on the space studies. Next, one thing that you need to keep in mind is this: watch this space. PM said that watch this space. In this particular space, there is space, there is pace, there is ace. मैंने बोला तीन चीज, space, pace, ace. ये याद रखना, मेंस में लिखने के बहुत ज्यादा काम आएगा. Is that correct? इसके अलावा आपकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ क्या है कि आपका इसका जो लोकेशन है वो और प्राइवेट सेक्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट. तो ये तीन चार चीजें इससे एसोसिएटेड है जो आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं दैट अलोंग विद दिस लॉन्च नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू. सो we can have a look at it, that the Gujarat Gaurav Abhiyan was in consideration and it was taking place at the Navsari region. Navsari is basically a tribal dominated region. We can say it is a tribal dominated region where all the efforts that the government is doing is for the ease of living. It is for the
ease of living, right? So to enhance the ease of living, the government is doing constant efforts. तो आपको ये याद रखना है that whenever Gujarat's Navsari is being considered, it is being taken care of and it is being discussed. तो आपको किस चीज से लिंक करना है इसको डायरेक्टली कि ये ट्राइबल अफेयर्स से एसोसिएटेड है और आपके ईज ऑफ लिविंग पे ये फोकस करेगा. एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी गाइस, दैट गुजरात में मान लिया मैंने ट्राइबली डोमिनेटेड है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? In the comment section. So this is not a lengthy session guys, as I have already told you. We will be doing a quick revision of all the news headlines. Yes, absolutely Surya. Arjun Munda ji is the minister of this particular ministry. Arjun Munda. हाँ जी, is that clear? Yes, अर्जुन जी काफी मतलब ऐसे ना फेमस वो है नाम और ये सब चीजें काफी जगह पे आपको आज सुबह हमने हिस्टोरिकल क्लास में भी अर्जुन सिंह गौर जी का रेफरेंस देखा था, है ना. वैसे भी अर्जुन मुंडा का रेफरेंस हम देख लेते हैं. ठीक है. हाँ जी, अरे आप कितना जी, बिल्कुल जितेंद्र जी करेंगे रेस्ट भी, आप लोग सिलेक्शंस करिए. ठीक है. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट सूर्या. So for the Gujarat Gaurav Abhiyan, whenever we talk about this particular program, this is inaugurated and laid, Prime Minister inaugurated and laid the foundation stone of a lot of things, in which the Gujarat Gaurav Abhiyan at Khudwel, which is a tribal region in the Navsari, which is a region, tribal region in the Navsari region. It is considered to be very of the a dominated region for the tribal communities, and there only the development for very prosperous things is needed, right? हाँ जी. ठीक है. ओके, आ जाए अब इस पे वापस. दिस इंक्लूड्स द इनॉग्रेशन ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे इन्होंने आपका फाउंडेशन स्टोन ले किया. कुछ जगहों पे इन्होंने क्या किया, भूमि पूजन किया. कुछ जगहों पे इन्होंने क्या किया, आपके इनॉग्रेशन किया प्रोजेक्ट्स का. तो ऑलमोस्ट 7 प्रोजेक्ट्स वर इनॉग्रेटेड, 12 का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और उसके अलावा आपके 14 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी किया गया. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, राइट. हुक्मा जी गुड मॉर्निंग, good evening, sorry. Okay, now also we have seen that the development of this particular region of Gujarat has been taken into account with this Gujarat Gaurav Abhiyan, right? गुजरात का जो हम अभियान देख रहे हैं जिसमें ओवरऑल गुजरात का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें एक चीज बहुत क्लियर है that before 8 years, past 8 years when the Modi government came into existence, Modi ji promised the people of Gujarat that he will be doing constant efforts to boost the economy, to boost the overall development of the state of Gujarat as well as India. So he is doing the same and we need to keep this in mind, right? अभी एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जो अक्सर प्रिपरेशन के टाइम पे मिस्टेक होती है. हम लोग जो है मतलब टू बी लाइक व्हेनेवर आई टेक एन एग्जांपल ऑफ मी, अगर मेरी कोई बात करे, आई लाइक थिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट, है ना. अक्सर हम लोगों को क्या चीजें चाहिए होती है, वी नीड क्लियर आंसर, राइट. But one thing that we forget is we are going to be diplomats. हम लोग इन जॉब्स के थ्रू डिप्लोमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं. So it's not necessary for us to have things black and white. We need a combination of black and white. That's gray. You cannot be 100% negative. You cannot be 100% positive. You cannot start with a positive attitude and you cannot end with a negative attitude. All you have to do is develop a pace in your answer writings which shows the negative, positive. But at the end, you need to whenever there is a question associated with the criticism or anything else, you need to answer that question and end that conclusion. The conclusion should be always in a diplomatic manner only, right? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सूर्य का पॉइंट बिल्कुल सही है. अगर हम गुजरात के एसोसिएशन में ही बात करें, सो ड्रैगन फ्रूट, दिस इज अ वेरी ग्रेट फ्रूट जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कमलम. जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, कमलम कर दिया गया. दिस कैन बी अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट. एग्जैक्टली. गुजरात के एसोसिएशन में एक चीज और है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है with reference to Gujarat, the development of Kaizen and Zen and Kaizen parks, right? एक तो ये along with this, the Japan contribution in the development of Gujarat, for which the Gujarat is also sometimes known as mini Japan. Just like we say Canada as mini Punjab, we have Gujarat as mini Japan.
राइट। सो आपके जापानीज कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चलो zen kaizen में मतलब क्या होता है ये बता दो जरा कमेंट सेक्शन के अंदर। व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ zen kaizen in the Japanese language? What do they stand for? Zen kaizen, yes Harshita, that's what I'm asking. Zen kaizen park, what do they stand for? मतलब क्या होता है इनका, लिटरल मीनिंग क्या है zen kaizen का? यस, नो वन? ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, zen kaizen, राइट और नॉट? हाँ जी, peace, absolutely true Surya. So zen kaizen denominates here peace. The references of zen and kaizen is with the peace, right? Okay, हाँ जी, focus भी हम इसे कह सकते हैं. Yes. Moving ahead to the next news headline, we have already seen this Krishi Vigyan Kendra which was started in the year 2012, and under this we can clearly observe the districts, that is Nellore and Prakasam, which was seen in news, and the state associated with the Andhra Pradesh. The state associated with this was the Andhra Pradesh. तो इसकी administrative building का निर्माण आपका हो रहा है, right? This is what the news headline is about. Agriculture Minister Shri Narendra Singh Tomar inaugurated the administrative building of the Krishi Vigyan Kendra, which is an important news headline. So guys, जो सुबह कर चुके हैं उन न्यूज को फटाफट एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर आगे की जो पेंडिंग न्यूज थी वो कंप्लीट करेंगे और रिविजन करेंगे, राइट? चलो, ये आपने देख ही लिया था. Speaking on the occasion, we all know that आजादी का अमृत महोत्सव is also being targeted in this particular. तो हम ये भी देख सकते हैं that the 75 years of independence have been contributing a lot to this particular like occasion, right? Yes. Next, we have seen that this particular this scheme that we are talking about, this particular kendra that we are talking about, is important for the progress of the farmers, as they will be growing better crops, they will be using latest technologies, they will be getting appropriate data about the health of the soil, and this will be enhancing the soil health card, which will be minimizing the use of chemical fertilizers, and the organic farming will be totally promoted of it, right? Next, we have seen the APEDA. APEDA is associated with the what? APEDA किससे एसोसिएटेड है? फूड किससे एसोसिएटेड है APEDA? बताइए जरा फटाफट से पहले. APEDA is associated with the development of what? Exports development of what specifically? Food products. So we can see agricultural and processed food products. Export Development Authority. This is the only authority responsible for the exports of the processed food, right? This is basically taking care of all the exports and the quality of the goods, the amount of the good, and how much production we have. क्या हमारे पास में किसी चीज़ का सरप्लस प्रोडक्शन है, किसी का सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, तो उनकी इवन प्राइसेस भी हमें अरेंज कराना. ऑल दिस इज अंडर द APEDA. The London Wine Fair, now the wine was seen in news, so we can refer to directly the state of Maharashtra, where the grapes is grown in abundance, and also the Indian wine, which is grain based, is also very famous throughout the world. And for that we have listed some of the countries. They are the United Arab Emirates, the Ghana, the Singapore, Congo and the Cameroon. तो ये सारी countries के अंदर भी आपका सबसे ज़्यादा alcoholic products का export इन्हीं जगहों पे होता है, right? Next, let's have a look at Maharashtra. Maharashtra is a very big state in the production of wine, in the manufacturing of wine, as there is more than 35 wineries in the state. So it's important. Next news headline is Rao Indrajit Singh to inaugurate the National Conference on the Competition of Law. So competition law as the part of Ministry of Corporate Affairs. This year, the iconic week celebrations under the AKAM in New Delhi will be taking place. Shri Rao Indrajit Singh, who is the Union Minister of State, independent charge for the statistics and programs implementation, will be taking care of the inaugural address, as she will be the chief guest. The conference will feature 2 technical sessions, that are the emerging issues on air antitrust enforcement and also the emerging issues in the regulation of combinations. So these 2 also you need to keep in mind. Along with this, the session on the emerging issues and regulation combinations will be chaired by Shri Bhagwant Singh Bishnoi, who is the member of CCI, and be moderated by Shri Arjit Barman, who is the deputy resident editor of the Economic Times. The AKAM Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations were inaugurated by the Honorable Prime Minister
in March 2021, which marks the 75-week countdown to the 75th anniversary of Indian independence. Now, this is, guys, important. On August 15, 2022, India will be completing 75 years of independence, right? Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, keeping that in mind, the government is neglecting these small things which will be ruining our celebration. They're targeting on what? They're targeting on the peace and prosperity. Next is the Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana dashboards launch. This is also very important. This dashboard was launched for the good governance that functions in the evidence-based decision making. If we have good decisions with the will to transform the country into digitally empowered society and knowledge economy, we will be needing daily new technological advancement and the contribution of the people. So this is also important for all of us, right? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट हर्षिता, बिल्कुल करेक्ट. इस टाइम भी क्लास आती क्या? बुधराम जी आज लगाई है ना? आज वीकली रिवीजन है. कोशिश करेंगे एवरी सैटरडे ये क्लास ले ले, ठीक है? एवरी सैटरडे हम ये क्लास कंडक्ट कर ले, इसकी कोशिश करेंगे. और कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, कंटिन्यू करें. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है. It's in line with the Prime Minister's vision that we need to use technology as a means. Means for what, guys? It is a means to empower our opportunities, to act as a bridge between the hope and opportunity. हमें उम्मीद है और हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, तो उन दोनों को क्या करना है, हमें साथ साथ में लेके चलना है. उसके लिए आपके प्रधानमंत्री जी बहुत वर्क कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट. फिशरीज डिपार्टमेंट आपका इंपॉर्टेंट है. एनिमल हस्बेंड्री से एसोसिएटेड चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फिशरीज हब के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है, देन फिशरीज हब इज एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ गोवा. The state of Goa is being chosen as the state to be developed as the fisheries hub in the budget 2021-2022, right? So that you need to keep in mind. Associating with the Dolphin Research Center, it is in the Patna University, Bihar. So these two questions can be asked from the fisheries department, though there are many questions. Also, we can refer to the one question, that is the increase in the count of the Chambal rivers, gharials and dolphins, which is due to the रिडक्शन इन दी इलीगल एक्टिविटीज लाइक पोचिंग, ठीक है? तो इन चीजों के ऊपर आप थोड़ा फोकस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. डैशबोर्ड का एम क्या है, बेसिक एम, तो ये हम सुबह डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन इज अबाउट व्हाट? दिस इज दी विमेन ऑफ राजीविका. विमेन ऑफ राजीविका. राजीविका के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? राजीविका के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? इज दिस स्ट्रेट? लेट मी जस्ट सी. Yeah, Rajivika. So women of Rajivika will learn video production editing by becoming video Sakhi resource person. So this is the news headline that is being associated with the Rajasthan. Rabies free भी first state गोवा ही बना है, बिल्कुल. और नो टबैको की बात नहीं करूंगी, टबैको रिडक्शन की बात करूंगी. That was seen in the state of Jharkhand. टोबैको में कंजम्पशन कम करना किस स्टेट में अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नो टोबैको, बट द अमाउंट ऑफ टोबैको दैट वी वर कंज्यूमिंग अर्लियर has been reduced to like a very big difference is being observed. So to note that difference, Jharkhand state is being awarded as the highest reduction in the consumption of tobacco, right? Next we have is the video Sakhi. Rajasthan Gramin Ajivika Vikas Parishad, that is the Rajivika. It will be now getting a video Sakhi. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. The state mission director, when we talk about Rajivika, Srimati Manju Rajpal ji, she informed that the women self-help groups in the 9 districts will be given training in video production by identifying them as video Sakhi. And this is the National Rural Livelihood Mission. They will be generating the rural individuals as the resource persons, and then they will be turning into the National Rural Livelihood Mission. With the help of the video made by her, राजीविका प्रचार सखी. प्रचार क्या है? एक तरह से प्रमोशन. तो विल प्रोपोगेट राजीविका रिलेटेड एंड अदर मैसेजेस फ्रॉम विलेज टू विलेज. एक वीडियो सखी वीडियो एडिटिंग का डिस्कशन सिखाएगी. दूसरी सखी जो है वो प्रचार सखी है. शी विल बी हैंडलिंग दी मार्केटिंग. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बूस्ट एक मिलने वाला है इससे. Whenever we talk about this regard, an MOU was signed by the Rajivika Mission Director, Mrs. Rajpal, with the Digital Green on Friday, right? Moving ahead,
Rajpal ji informed that the MOU has been signed with the NGOs for 9 blocks of the districts affiliated with the National Rural Economic Transformation Project, and through this project, self-help groups, while doing the capacity building work free of cost by June 2024, production training will be providing quality of the video deliverability. तो ये आपका बहुत important आपका बन जाता है. Next comes the point associating with the promotion सखी. Now video सखी और प्रचार सखी ये दोनों ही आपकी important है. अगला क्वेश्चन आता है, अगली न्यूज हेडलाइन आती है, the 14th review meeting of state level advisory committee. Now state level advisory committee, it is important for us to note down that the government of Rajasthan is doing constant efforts to have this meeting. What they are doing, the chief secretary Srimati Usha Sharma directed that the work of physical verification of the gaushalas should be completed in a time bound manner so that the work of development of cows could be completed smoothly. So they targeted the work on the development of the gaushalas and the cows. Later on, she was presiding over the 14th review meeting of the state level committee, where Gaw Sanrakshan and Samadhan Nidhi through video conferencing was kept in mind and was discussed with the people. Uddam Sakhi portal bhi hai, bilkul Rajasthan se, absolutely true. Next, she said that the process for the first phase of assistance in the month of April, May, June and July, current financial year, should be completed within the stipulated time. So they all are targeting on the improvisation of the Gaw Sanrakshan, which is our Gaw Mata. ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए यहाँ पे बात की जा रही है. Whenever we talk about the government secretary of the Gopalan department, Puran Chandra Kishan, he apprised him in the detail about the progress of the decision taken in the last meeting, which was targeting the upcoming Gopalan department. So Gopalan department important है for the welfare of the cows. Next news headline is associated with the Food Safety Commissionate's hard work, which brought color 37 residential schools of Rajasthan got Eat Right School certificate status for high quality, hygienic and nutritious food. इसका मतलब ये है कि 37 residential schools जो हैं आपके राजस्थान के, उन्हें क्या स्टेटस मिला है? ईट राइट स्कूल सर्टिफिकेट. इसका मतलब उनका एप्रिसिएशन हर जगह सराहा गया है, राइट? And in the sectors of what? Quality, hygienic and nutritious food, right? Moving ahead, when we talk about the leadership of the Chief Minister Ashok Gehlot, Medical and Health Minister Prasadi Lal Meena was seen in news as the Food Safety and Drug Control Commissionerate is setting new records every day. In this particular series, we can see 37 residential schools of Rajasthan being targeted under the Eat Right schools. For the first time, it's a matter of pride of the state to get this certificate in such a large number. ठीक है, पहली बार हुआ है ऐसा कि 37 schools के लिए इंडिया को appreciation मिल रहा हो. So this is a very nice thing for Indians. The certificates have been obtained on the basis of fulfilling all the standards of high quality. ठीक है, पहली बार कंट्री के लिए भी ये इनिशिएटिव हुआ है. Along with that, the certificate have been obtained on fulfilling all the standards and high quality, hygienic food, nutritious food, and all these success like this. Under this particular direction of Medical and Health Ministers, Prasadi Lal Meena, who is the officer of the Food Safety Commissioners, identified the schools in the collaboration with the Education Department. Guys, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. ये गर्व की बात है कि 37 आपकी डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स के अंदर राजस्थान के इकलौते 37 स्कूल्स हैं. 37 schools are very very important and a very big number to be kept of, right? हाँ जी, मैं बिल्कुल इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगी जी, बिल्कुल करवा देंगे. ठीक है, चलो. Whenever we talk about these training programs, which are organized for the academic staff and the schools, the cooking staff and the capacity building of the students, they were all informed about the food safety standards, from foods to vegetables to cooked food, how hygienically they are served, eaten, maintained. All this information was provided during the training, and we need to assure that the training was provided in a very better manner, as it is a long-term deal, not a short-term deal. Next question and the last question for the day was associated with the Shaurya Chakra winner, Major Pavan Kumar. Tokyo Paralympics gold medalist Avni Lekhra and Krishna Nagar will get the plots. तो plots मिलने वाले हैं भैया इन्हें, ठीक है? Plots मिलने वाले हैं इन्हें, which is very very important. So keep this in mind. This will be also given plots to 2 sports persons who won the Shaurya Chakra winner and a gold medalist in the Tokyo Paralympics. This is the meeting of Land and Property Disposal Committee, which took place on Friday, and these disposal cases were sent to the state government. Later on,
Ravi Jain informed the Shaurya Chakra winner Major Pavan Kumar, Tokyo Olympics winner gold medalist Avni Lekhara and Krishna Nagar that you will be given the plots under the Nilay Kunj scheme. तो निलय कुंज स्कीम के अंदर इनको प्लॉट दिया जाएगा. 225 प्लॉट हैं, देखते हैं किसको ये अलॉट होता है. रेट इन सब की फिक्स है यार, कोई डिस्काउंट नहीं हो रहा है. इसके बाद में हम बात करते हैं अवनी लेखरा की. So whenever we talk about Avni Lekhara, she sets the world record to win the Para World Cup, which is very, very important for her. Avni Lekhara becomes the first woman to have achieved the Wild Award. Right? हाँ जी. Next news headline देखिए, Emilia Babaska of Poland, who won the silver with a score of 247.6. While Amma Norman of Sweden took the bronze with a score of 225.6. So the SH1 category is for the athletes competing in the events who have never a lower limb handicap. जिसको कभी ये नहीं हुआ है वही इसको अच्छे से फंक्शन कर सकता है. Is that clear? चलो नेक्स्ट लेखरा वन. अगर हम बात करें लेखरा की, then she won a very long many top prizes after her coach and escort were denied visas and she was in danger of missing the tournament. She won the gold in the 10-meter air rifle and air standing event in the SH1 category at the Tokyo Paralympics of the year August. अब एक सिंपल सी चीज है गाइस, पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स से एसोसिएटेड न्यूज हेडलाइन आपसे पूछी जाएगी. तो मेरा तो ये मानना है कि पैरालंपिक्स और मतलब जो ओलंपिक्स हैं इससे एसोसिएटेड न्यूज़ेस आप पहले ही कंसिडर कर लो ताकि बाद में से प्रिविजन हो और तब कोई भी ऐसा वो फील नहीं हो, है ना. टोक्यो पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स से एसोसिएटेड न्यूज आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी. राइट. चलिए, चाइना का क्रूड मिशन हमने देख लिया था, दैट इट हैज लॉन्च्ड द मैन्ड मिशन and this will announce that 3 astronauts have been dispatched on a 6-month mission to complete the work on country's permanent orbiting space. The Shenbo 14 crew will stay abroad. इसमें अभी आपकी किस किस की बात हो रही है? तियांगोंग स्टेशन की हो रही है, शेंजू स्टेशन की आपकी बात हो रही है. तो ये दो की बात तो बहुत अच्छे से की जा रही है, which I think you should keep in mind, right? खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है बिल्कुल इन्होंने. सूर्य को सब पता है. चलो, next is CRET, India's first rupee-based crypto index launched by CoinSwitch. So CoinSwitch is a very important application which has been launched by the India for the crypto index. This has been launched by CoinSwitch. According to the crypto exchange, it is India's first benchmark index for measuring the performance of the Indian rupee-based crypto sector. Now CRET की बात करते हैं. They have been the monitors and performance of 8 crypto assets that account for more than 85% of the entire market capitalization. अब ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन का रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है. जब भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात आती है, then this shows that how much of this particular thing is responsible for the development procedures. Based on the actual deals, the index provides a trustworthy real-time perspective of the Indian rupee denominated. The crypto market allowing Indian users to make informed investment. Guys, अब क्या हो रहा था? Usually जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, then it's not basically sure to process the जब भी हम मतलब बात करते हैं कि हम इस चीज को प्रोसेस करेंगे आगे, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, क्रिप्टो के रेफरेंसेस में. तो इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है दैट वी विल बी ऑन योर एंड डूइंग कांस्टेंट एफर्ट्स फॉर द योर क्रिप्टो to make informed investment decisions, and the index which provides real-time insight into the crypto market. This is based on actual CoinSwitch transactions and it was updated 1400 times a day, and it's very, very important. CRET is difficult from another crypto indicates that in the whenever we talk about in this particular discussion, cryptocurrency is in some countries considered to be illegal. So which country was seen in news with respect to the cryptocurrency being illegal? To be legal. Which country is seen in news to see the cryptocurrency being legal? The first country I would say. Bhushan, good morning.
चलो बताओ बताओ। कॉइन स्विच की बात हो रही है, कॉइन स्विच का आपको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बड़ा सिंपल सा पूछा है, क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? दैट्स नॉन अदर देन एल साल्वाडोर। एब्सोल्युटली ट्रू। और एल साल्वाडोर पे क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, चाहे घुमा फिरा के आए, चाहे आपका मैप्स पूछे आपसे, चाहे ग्राफ पूछे, इस पे क्वेश्चन आएगा। Next we have is the WhatsApp launched the SMB Sathi Utsav to support the small businesses. Whenever we talk about the small businesses, it is important for us to note down that the WhatsApp is also doing the efforts in it. So here we can refer to Utsav has started the initiative with a pilot in Jaipur's Johari Bazaar and Bapu Bazaar, where over 500 small businesses are being trained for a betterment of the economy, right? हाँ जी, हाँ स्लाइड ज्यादा टाइम हो गया क्या आपको? हर्षिता कह रही है कि स्पेलिंग जिसकी सही होगी उसका नाम लेंगी मैम। तो सूर्या इट्स ELSALVADOR, सेल्वेडोर, राइट? W नहीं आएगा इसमें, ठीक है? बन रही है, सो सीन इन न्यूज, राइट? एब्सोल्युटली ठीक है। चलो हर्षिता का आंसर करेक्ट था, ठीक है। ये सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन बातों पे लड़ते हैं ना, मुझे इतनी हंसी आती है कभी कभी कि वाह शाबाश, ऐसे होगा पास एग्जाम। ये तो मैम मम्मी मुझे वो कॉपी में मैं होमवर्क अच्छा करूंगा, मुझे भी आइसक्रीम तो जैसे हमारी मैम देती है वो वाली बात हो गई, गजब। चलो coming to this nice next this was in collaboration with the Josh Talks, this is very important, है ना? हाँ जी, मुझे दिख रहे हैं भरत कमेंट्स, क्योंकि वो सम्यक सिविल सर्विसेज पे चल रहे हैं। आप सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश पे देख रहे हो क्लास। SMB Sathi Utsav is the second phase of the SMB Sathi campaign, now which will be targeting what? Which will be targeting the groups, the small businesses groups, and creating an environment for them to function in a very better manner, right? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो सूर्या। विराट कोहली, he becomes the first Indian to reach 200 billion followers on Instagram. 200 million followers on Instagram is a very big thing, and he becomes the first Indian to reach that milestone. So we need to keep in mind, right? हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाती है ना कभी कभी, मुझे भी ये लगता है। चलो कोई बात नहीं, ये सिर्फ इसमें यही न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट थी जानने की। Along with that, SAIL celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav by participating in the DPE's Mega Exhibition. Now, what we talk about the DPE's Mega Exhibition, we can refer to the Department of the Public Enterprises Mega Exhibition to commemorate the Azadi Ka Amrit Mahotsav at the Mahatma Mandir Convention Exhibition Center, Gandhinagar, Gujarat, from 9th to 12th June 2022. This exhibition was inaugurated by the Chief Minister only, Bhupendra Bhai Patel, and the Nirmala Sitharaman ji, who is the Union Finance Minister and the Corporate Affairs. So this is also again a news associated with the Corporate and the Business Academy. तो हर्षिता कहेंगे कि मैम ये न्यूज भी बिजनेस से आ गई है आज तो। Next, Mahesh ji, welcome. Soma Mandal, the chairman of SAIL and Scope, was also present during the occasion. So this is also very important. And as a part of the nation building and the CFCs, 75 central public sector enterprises with various sectors are participating, which also includes the SAIL. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू द सेल, एंड सेल इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द जन आंदोलन ऑफ कोमेमोरेटिंग द आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट इज 25 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विल गेट फ्री सीड मिनिकिट्स। तो भाई सीड मिनिकिट्स की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, each and every individual with respect to all the farmers and everyone will be getting the seed minikits, which in turn will be helping everyone to develop a taste in what associating आपका हम बात कर सकते हैं यहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस सेंस में होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें आपके सीड मिनिकिट्स के डेवलपमेंट में, तो इससे आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। समझ में आ रही है चीजें? ओके, हैव अ लुक एट इट, आई विल हैव अ वाटर ब्रेक। मनी इज इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग पेशल। पेशल, मॉर्निंग में मैंने बताया था ना कि आज इवनिंग में क्लास है, डेली नहीं होती है, वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक ही रखेंगे इवनिंग वाली क्लासेस।
और ये यूजुअली वीकली करंट अफेयर्स और वीकली टेस्ट वाली रखूंगी, इसलिए कि ताकि जिन बच्चों का कभी मॉर्निंग सेशंस होते हैं, किसी की ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो वो इजीली एटलीस्ट ये एक क्लास तो हमारे साथ में लाइव अटेंड कर सके, ठीक है। सो नॉट मेनी क्लासेस, जस्ट 2 classes in a week, which means 4 days you won't be having any classes in the evening, just 2 days you will be having any class, and that will be between 4 to 6, right? Okay, बड़े बड़े आगे रिविजन ही तो करना था आज खाली. So this is important. Kharif year 2022, 1 million farmers will be given mini kits of the hybrid millet seeds. तो millet seeds का रेफरेंस यहाँ पे है, ये भी आप ध्यान रखिएगा. Half kg of millet will be packet per farmer. Half kg millet per farmer को दिया जाएगा in the seed mini kits contribution. Next is this association of detailed news given है, लेकिन इसका डिस्कशन हम ब्रीफ में करेंगे. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिलीजेस दी FSSAI's 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसके अंदर हम देख सकते हैं टॉप रैंकिंग लार्ज से स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर तमिलनाडु टॉप पे रहा है, स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में गोवा टॉप पे रहा है, और आपकी यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे रहा है. जम्मू एंड कश्मीर के बाद में दिल्ली और चंडीगढ़ है, यहाँ पे गोवा के बाद में मणिपुर और सिक्किम है, यहाँ पे तमिलनाडु के बाद में गुजरात और महाराष्ट्र है. यू वांट मी टू राइट इट इन द सीक्वेंस? देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. डन. व्हाट डन? मंडे को सरप्राइज टेस्ट है. जो न्यूज हेडलाइंस पढ़ेंगे आप, तो उनका रिविजन टेस्ट मैं मंडे को लूंगी, क्वेश्चन आंसर्स होंगे उस क्लास के अंदर. हेमा जी, अ वेरी गुड इवनिंग. मूविंग अहेड. देखो गाइज, ये न्यूज हेडलाइन याद रखना, इसमें 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, लार्ज, स्मॉल और यूटीज. यूटीज में JNK ने टॉप किया है, स्मॉल में गोवा ने टॉप किया है, और लार्ज में तमिलनाडु में, ठीक है. और यहाँ पे FSSAI का रेफरेंस है, ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है. ये 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है. ओके, चलो नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके अंदर. फर्स्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है. यस, ऑन द 10th नंबर इज द स्टेट ऑफ राजस्थान. एब्सोल्युटली ट्रू पेशल, वेरी नाइस. नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन इज एसोसिएटेड. अच्छा, एक चीज और याद रखनी है ना इसमें, द थीम वाज सेफर फूड एंड ग्रेटर हेल्थ. फूड से एसोसिएटेड थीम तो हमें याद रखनी पड़ेगी ना. हाँ जी, तमिलनाडु, गोवा एंड जम्मू एंड कश्मीर. हाँ, देखते हैं सुबह रखते हैं शाम को, मोस्ट प्रोबेबली शाम को ही रखेंगे टेस्ट. Next is the Ayurveda Ahar was also launched. The logo of it was also launched. It is also important. And a book Khadyanjali was also launched, which is a quarterly journal produced by the FSSAI's Rajya Bhasha Division. So this is also important, guys. Khadyanjali के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, right? क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आपके डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं. बुक्स एंड ऑथर्स आर सीन इन न्यूज which are associated with the government only, right? So the next news headline over here is the Sital Shashti festival, which is being celebrated in the Odisha in the month of Jyesht. तो ज्येष्ठ महीने की बात हम करते हैं, शुक्ल पक्ष के 6th डे को हम ये सेलिब्रेट करते हैं. तो ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी को हम क्या मनाते हैं? शीतल षष्ठी मनाते हैं. दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? दिस इज द ग्लिम्स ऑफ महाशिवरात्रि एंड शीतलाष्टमी. दोनों का ग्लिम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. महाशिवरात्रि पे शिव और पार्वती की शादी होती है नॉर्थ इंडिया के अंदर. सेम रेफरेंस यहाँ पे उड़ीसा के अंदर महाशिवरात्रि शीतल षष्ठी को देखा जाता है. ऑन दिस पर्टिकुलर डे द Shiv and Parvati gets married, in which Shiv represents the heat, the burning heat, the scorching heat of summer, and Parvati represents what? The first rain. So this is very important for us to note down, right? This is important. This is an holy day for the Hindus. Goddess Parvati is adopted by 2 families. They both are adopted, and on this particular day, their wedding is solemnized with the involvement of the rituals. The goddess then carried around the city via a procession. दोनों की शादी कराते हैं, और जैसे अपने यहाँ पे झांकी निकालते हैं, वैसे इन दोनों का प्रोसेशन पूरे शहर में किया जाता है. उड़ीसा चीफ मिनिस्टर इज नवीन पटनायक. वी नीड टू कीप इन माइंड. और उड़ीसा से एसोसिएटेड एक और चीज बता देती हूँ, ऑलिव रिडले टर्टल. Olive ridley turtle, which was also seen in news, was observed and found on the coast of Odisha only. Odisha's Chilka Lake is now not a part of the Ramsar site. These 2 newses are important with reference to Odisha, right? Okay. Next we have is a news headline associated with the Goa CM. Goa's chief minister has launched the Beach Vigil application for the holistic management of the beaches and to promote the tourism. For the safety of the beaches, the tourism activities to be promoted, and under this, the Chief Minister of Goa has launched the Beach Vigil application. This is the collaboration between the IT sector and the tourism sector.
which will be basically aiming the tourists and institutions working on the beach tourism and in the management of the beaches, जहाँ पे कचरा नहीं फेंकें लोग, आपकी हर चीज को हम सिस्टमैटिकली मैनेज करें. गैलापागोस आइलैंड से बेसिकली आपके बिल्कुल ऑलिव रिडेड टर्टल जो है वो आपके हैं. ठीक है, भीतरकनिका की भी बात आ गई है. ओहो क्या बात है. चलो तो फिर एक और चीज पूछ लूं क्या, डिंकिंसन या फॉसिल के बारे में भी पूछ लूं या रहने देते हैं, होमवर्क में दे देते हैं. डिंकिंसन या फॉसिल भी न्यूज में रहा था, कहाँ मिला था जरा बता देना. केव्स हैं, कौन सी केव्स हैं ये बता दो. ठीक है, स्टेट भी बताना. बीच विगल की बात करते हैं. So this will be the Drishti workers, police and the other stakeholders which can raise issues for the safeguarding and the interest of the tourists. अभी क्यों किया गया था? Because the rape cases are increasing in the Goa. In the state of Goa, the rape cases are increasing. Now to stop that, this particular application was launched so that the tourists and the local people won't be facing any problem. तो इसमें tourism का promotion लोगों को security provide करके है, ये आपको ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है? एमपी भोपाल में मिला था भीमबेटका केस के अंदर. एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है. गाइस इसके अंदर आपको अभी क्या याद रखना है इस न्यूज के अंदर कि हमें इसमें क्योंकि इंक्रीजिंग रेप्स हैं. एक सेकेंड, as there is an increase in the count of the rapes in the state of Gujarat, in the state of Goa, so the Chief Minister of Goa has launched this beach vigil application. Now this will be targeting on the safety and security of the tourist, via which the Drishti workers, the policemen, the stakeholders can easily report any case and any threat which they are facing on the beaches. So now beaches will be taken care of in terms of safety. हम क्लेanliness की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे साफ सफाई की बात हो रही है. किस गंदगी की? जो रेपिस्ट्स हैं उनकी गंदगी की बात यहाँ पे हो रही है. So you need to keep this in mind that see a beach vigil application is associated not with the cleanliness, but it is the cleanliness of the rapists, right, on the streets. Yes. Next, let's move ahead. There is a high growth rate in the increased cases of rapes in Goa, right? Next, Goa festivals. The Goa Mango Festival is considered, and which I have already asked the question associated with the Banana Festival, which is being celebrated in the Kushinagar, Uttar Pradesh. So, Mango Festival in Goa and Banana Festival along with Kerala in the state of Uttar Pradesh, right? Kushinagar. Next news headline that is associated and important is the rabies free. Goa rabies free हुआ था. PM Modi launches new series of coins on the Azadi का अमृत महोत्सव डिजाइन. तो ये भी अब इंपॉर्टेंट है यार. ठीक है, ₹1, 2, 5, 10, 20 के डिनोमिनेशंस के कॉइन्स अब आपके नए आ गए हैं. ये कोई कॉमेमोरेटिव कॉइन्स नहीं है कि सिर्फ ये अभी ही टारगेटेड होंगे, ये आपके आने वाले टाइम में भी टारगेटेड रहेंगे, आपके आने वाले टाइम पे भी चलते रहेंगे. ये मतलब से बंद होने वाले कॉइन्स में से नहीं है. अब इसके साथ में आपके जो दो बैंक एसोसिएटेड हैं, they are the HDFC Bank and the Axis Bank, जो आपके इन कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूशन का थ्रू देयर स्पेशल ब्रांचेस अथॉरिटी गारंटी ले रहे हैं. नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन, मारुति सुजुकी ने एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट पावर सोलर प्लांट आपका वो किया है, इंस्टॉल किया है इन दी मानेसर. एंड व्हेन वी हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर सोलर प्लांट, अभिषेक कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे जी. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोलर प्लांट की, तो सोलर प्लांट से एसोसिएटेड चीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज बिकॉज ऑफ दी, मैंने एक नाम बताया था कि ये सोलर पावर प्लांट्स एक नाम से जाने जाते हैं. वो नाम क्या है जरा बताएंगे आप मुझे? वो पर्टिकुलर नाम क्या है जिससे एसोसिएटेड सोलर पावर प्लांट्स हैं? ये बताइए. यस गाइस, एनीवन वुड लाइक टू आंसर? Yes. Just wait a second. In continuation with the solar plant, whenever we talk about this, I have referred to that
there is a new type of solar plant which was installed in the Manesar region. तो मारुति सुजुकी ने क्या किया है कि ये पूरा इतना बड़ा लैंड एरिया कवर किया है फॉर द लार्जेस्ट सोलर प्लांट. किस चीज से एसोसिएटेड है गाइस? इसका नाम मैंने आपको बताया था. इट इज द कारपोर्ट. This is the Asia's largest solar carport according to the business news headlines, which is being developed in the Manesar region. So this is also an important news headline, right? Next news headline is associated with what? तो देखो इसमें सिर्फ एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि in addition to the car services, मतलब cars की services एक अलग चीज है, उनके लिए shelter provide करना, street parking, ये सब चीजें एक अलग चीज है. Along with that, the generation and the involvement in the renewable energy by any of the businesses, this is the highest. This is the highest in number, right? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. The next news headline is the state government committed to promote organic farming. Now the Rajasthan state government is concerned in promoting the organic farming. Now whenever we talk about organic farming, seed mini kits were distributed to the people, right? Seed mini kits का रेफरेंस यहाँ पे आएगा. प्लस एक और चीज आएगी that 2022-23 के बजट के अंदर स्पेसिफिक बजट आपका पास किया गया था कि बायो पेस्टिसाइड्स किट के लिए 90% सब्सिडी एक फार्मर, इंडिविजुअल फार्मर को दी जाएगी. और टोटल कितने फार्मर्स हैं? 1 लाख फार्मर्स का यहाँ पे बात की गई है. और ये भी कहा गया है कि 50% फार्मर्स का टारगेट ऑलमोस्ट हम अचीव कर चुके हैं, राइट? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Farmers will now only have to pay the 10% amount that he said is the provision of 9 crore has been kept for this. Farmers को सिर्फ 10% अमाउंट देना है, इससे ज्यादा अमाउंट फार्मर्स को नहीं देना है. Is that clear? Okay. Moving ahead, guys. Let's move ahead with this news headline again. Advocate Shri Purushottam Sharma. Now we are talking about whom? We are talking about Purushottam Sharma, who has been appointed as the position of the Deputy Government Council, Additional Government in Rajasthan. तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है. इन दोनों की सैलरीज गिवन है यहाँ पे, ठीक है. एक तो पुरुषोत्तम शर्मा जी की बात यहाँ पे की गई है, अलॉन्ग विद दैट श्री राजीव खोकर की भी बात यहाँ पे की गई है. तो इन दोनों को ही पोजीशन दी गई है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कारपोर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके. ओके. राजस्थान के राज्यसभा इलेक्शन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी तो न्यूज में है. बिल्कुल है, तभी तो राज्यसभा इलेक्शन की मैंने आपको बात कही थी कि राज्यसभा इलेक्शंस पढ़ के आना, राज्यसभा पढ़ के आना, राइट? ओके, राज्यसभा पढ़ के आना, राज्यसभा इलेक्शन पढ़ के आना बोला था ना, इसीलिए बोला था. Coming to the news headlines, back again, guys. The 13th meeting of the state level traffic management committee was set up. This is associated with the state of Rajasthan, in which the decisions were taken care of to provide the 108 and the National Highways Authority of India ambulance should have a solid control in reducing the accidents and reporting to the cases effectively and on timely. So we have to take care of the reduction of the accidents. So हमें किसके ऊपर basically focus करना है? Reduction in the accidents. Tracking system to be ensured in road accidents and to the hospitals immediately. Delivery to the hospitals immediately. This is to be taken care of. 4 from the Rajasthan and 3 from the Congress and 1 from the. पूछा नहीं है. चलो, जितना सा पूछते हैं उतनी सी बात किया करो. इलेक्शंस की बात किसने करी अभी? अभी इलेक्शन नहीं करने हैं. जब तक कंट्रोवर्शियल चीज चलती रहती है उसके बारे में चर्चा करनी ही नहीं है. क्यों करना है टाइम वेस्ट फालतू में? एग्जाम में कोई पूछेगा टारगेट करते हुए कि बताओ भैया राज्यसभा इलेक्शन में क्या हुआ था, किसने क्या टिप्पणी दी थी? कोई पूछेगा? व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो मिनिस्टर? नोबडी विल आस्क यू दैट. इंस्टेड दे विल आस्क यू द प्रोसीजर ऑफ द राज्यसभा इलेक्शन व्हिच यू नीड टू नो, for which I asked you to go through your Lakshmikant or DD Basu, whichever book you refer to, or any of the NCRTs associated with the 11th and the 10th, 12th standard. They will be helping you all in completing your course. तो इस तरह से कोर्सेज आएंगे. टिप्पणी नहीं पूछे, स्टेटमेंट्स नहीं पूछेगा, नहीं बोलेगा कि उसने ये कहा था इसलिए पूरी जनता ने, या इंटरनेशनली आप क्या ये डिबेट खड़ा हुआ और फिर हमने उनको डिसोन कर दिया है, बार्ड कर दिया है. नहीं पूछेगा, राइट? दोज रिक्वायर्ड है, देंगे. Coming to this news headline again, the road accidents, the transport department should campaign through district collectors to prevent the overloading, drink and drive and encourage the installations of the helmet. तो अब इन सब के ऊपर ध्यान देना है हमें, ठीक है? और as a responsible citizen मैं भी आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, that be safe whenever you drive. Use your helmets, do not drink and drive, do not overspeed your cars or your motorbikes, anything.
बी इन कंट्रोल एंड प्लीज ये जो स्पीड लिमिट्स और ये सब चीजें आती है, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, इनका ध्यान रखिए, बी सेफ, राइट। हाँ बिल्कुल, रोड एक्सीडेंट्स को क्योर करने के लिए हर्षिता, और इसी के साथ में क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए, रोड एक्सीडेंट वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ऑल्दो वीक मनाया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर 2021 में हमने रोड सेफ्टी मंथ बनाया था। सो विच इज द स्पेसिफिक डेट फॉर दैट रोड सेफ्टी मंथ? इन द कमेंट सेक्शन टुमारो मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट NHAI का तो कंट्रीब्यूशन आप लोग सब जानते ही हैं। अलॉन्ग विद दैट द अप्रूवल ऑफ द वर्क्स इन द ऑल कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड पर्सनल टॉयलेट्स दिस मंथ। तो देखिए ODF प्लस के अंदर वन थिंग दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ इज द सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है। All the government 75 kilometer in 5 days record by NHAI, absolutely true. Qatar ka road record toda, absolutely true. The National Highways Authorities of India has constructed a 75 kilometer road in 5 days, and this is a record breaking news headline which was recently हमने कर ली है डिस्कस, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। September is celebrated as food month, food safety, nutrition, not associated with road safety, हर्षिता। रोड सेफ्टी वीक और मंथ पूछा है मैंने, सितंबर तो न्यूट्रिशन के लिए है। September is being celebrated as the nutrition month and nutrition week, not for the road safety. Please make sure that you are revising the thoughts clearly. Please. February to March हम road safety month मनाते हैं. This was very disappointing. Road safety month, yes, absolutely. ठीक है भरत, correct. So here, Shri Jain was reviewing the progress of the Swachh Bharat Yojana with the CEO and the BDOs through a video conferencing in the Panchayati Raj Bhavan, through which we have concluded that now the sanitation facilities need to be improved. इसे हमें improvise करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा boost करना है। महीना जो है वो फरवरी से मार्च है, हफ्ता जो है वो सिर्फ मार्च में है। वीक जब बात करेंगे that is the second week of March. And whenever we talk about the month, then from the third week of February to the second week of March, we celebrate what? We celebrate the road safety month. We celebrated this on last year only, okay? Next question. While reviewing the ODF plus schemes, he gave instructions regarding some solid and liquid waste disposals. तो इनके ऊपर भी हमें ध्यान रखा गया। Next हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट रिलीज्ड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। गाइज ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों ध्यान रखनी है ये न्यूज हेडलाइन? क्योंकि ये राज्यसभा इलेक्शन से एसोसिएटेड है। ये सिर्फ न्यूज हेडलाइन क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि DIPR के पेज पे थी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको जो आती है वो आती है दैट यू नीड टू थॉरली रीड द राज्यसभा एंड लोकसभा। फॉर दैट द क्वेश्चंस विल बी टेकिंग, अभी रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नया, सो ठीक है, तो कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। बट बिफोर दैट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज राज्यसभा और लोकसभा अच्छे से कवर कर लो। उसके क्वेश्चंस आएंगे थोड़े ट्रिकी आएंगे, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लाऊंगी, राइट? So India and Canada inked an MOU on the climate action for the stronger cooperation, in which we have seen the environmental protection and conservation was the major thing, and environmental change was also the major thing that we have discussed. So the MOU was in the interoperability, how we can function our interoperability, how we can adopt things from each other and work on a better environment, how we can work on saving the environment, and a lot of things, right? Next we have to look upon आपसे पूछ सकता है कि किस देश के साथ में इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के लिए MOU साइन किया है। ठीक है, DR फाउंडेशन, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। उपेंद्र जी, अ वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, मूविंग अहेड, the next news headline is associated with the Kia artificial intelligence that downloads or that launches the Kiaverse, which is a metaverse in itself. तो मेटावर्स के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेटावर्स की बात हम जब करते हैं, दिस इज फॉर द क्लाइंट्स एंड द पार्टनर्स एंड द एम्प्लॉइज that through the services they will be getting an access to everything, and robots will be giving advices to them in relation to any of the loan queries and anything else. So पहला मेटावर्स जो आपके बैंकिंग सेक्टर में आया, that is by the Kia artificial intelligence, that is the Kiaverse. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, राइट? आपका फेवरेट टॉपिक है सोनू। कोई क्वेश्चंस आ गए तो ट्रिकी नहीं हो जाए थोड़ा सा, है ना? Yes, 50th Stockholm Conference was also seen in news with reference to the India and Canada MOU. Absolutely true, Surya. 50th year of the Stockholm Conference. Absolutely true, Surya. Very nice point. ये तो मैं भूल ही गई थी बताना।
ये फीचर्स वगैरह देख लेना, इंपॉर्टेंट है. देन अगेन वी हैव टू सी दैट जुल्फिकार हसन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ द BCAS. Very, very important, guys. Two people were seen in news. Zulfiqar Hassan was seen in news. Along with him, SL Thousand was seen in news. SL Thousand was the DG, Director General of the Sashastra Seema Bal, and the Zulfiqar Hassan being the head of Bureau of Civil Aviation Security, respectively. These two have been appointed recently. And when we talk about the last position which was taken care of by both of them was they both were the IPS officers of 1988, right? Hassan was serving as the Special Director General of the CRPF Delhi, and he is a West Bengal cadre IPS officer. Zulfiqar Hassan की बात हो रही है. SL Thousand की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जब हमने SL Thousand सशक्त सीमा बल के DG अपॉइंट हुए थे तब न्यूज हेडलाइन देखी थी, राइट? नेक्स्ट एसोसिएटेड न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं फटाफट से. एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अंदर इंडिया की 4 यूनिवर्सिटीज ने अपनी रैंक को क्लेम किया है, इन विच दी IISc बैंगलोर हैज टॉप. तो इनमें याद रखिएगा, फर्स्ट अगर हम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर ने 42nd पोजीशन ली है. नेक्स्ट दी JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन द 65th पोजीशन. देन दी IIT रोपर एंड IIT इंदौर ऑन 68th and 87th पोजीशन रिस्पेक्टिवली. So which is that what you need to keep in mind? SL Thousand, SSPK Director General, absolutely true. Mission Zulfiqar. सारे मिशन याद आ जाएंगे ऐसे तो. चलो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं फटाफट से. इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेट्स इन द एक्स-खान क्वेस्ट 2022 होस्टेड बाय मंगोलिया. इसी के साथ में अभी एक चीज याद रखिएगा, एक तो नाम याद रखना है इस एक्सरसाइजेस का, अलॉन्ग विद दिस नेम ऑफ दिस एक्सरसाइजेस, मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. रिसेंटली गिवन टू एन इंडियन. उनका नाम आपको होमवर्क में मुझे बताना है, ठीक है? लद्दाख स्काउट्स ने अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट किया था इंडियन आर्मी को, एंड दिस एक्सरसाइज विल बी इनेबलिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशंस, एंड इंडिया along with 16 other countries had participated in this X-Khan Quest 2022, which is the exercise associated with the Mongolia. Is that clear? ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन देख लो फिर. Benefit deal for the Taiwanese papaya farmers. So we can refer to which states, which nations papaya are in high demand for the profits of the farmers. So Taiwanese papayas will be referred over here. ठीक है, types आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये देकर आई थी. They also have lots of sweetness in them. They are like cultivated in the Bhilwara district, and they are large in length, weight, while the seeds in it are also very less. तो यहाँ पे जो बीज की बात हो रही है वो बहुत कम है आपकी. इज दैट क्लियर? क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन देखते हैं. गैंगस्टर क्लीन बोल्ड ऑपरेशन. फ्रॉम वेयर दिस ऑपरेशन वाज स्टार्टेड? दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट चूरू ऑफ राजस्थान, under which a lot of gangsters have been raided. So you need to keep this in mind. This can be asked in the examination. R.K. Sabharwal received the Mongolian highest civilian award, right? Absolutely. So gangster clean bold operation किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है ये आपको पता होना चाहिए. It is from the district चूरू. Gypsum mining taking place in a very high manner in the Rajasthan. तो ये भी आपको याद रखना है. राजस्थान के अंदर अगर हम जिप्सम के रिजर्व्स देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे हैं? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर एंड नागौर. These are the deposits of the gypsum. Right. Next we have the news headline associated with the Gaushalas. So 1100 crore rupees will be given to the Gaushalas, and today only we have seen the news associated with the Gau Sanrakshan. तो दोनों ही important है. गौशालास के लिए पैसे दिए जाएंगे. ये किसके अंदर आ गया था? आपके राजस्थान गौ संरक्षण एंड समर्दन निधि 2016 रूल्स के अंदर आ गया था. द प्रोसेस ऑफ पेमेंट, जो भी आपका अमाउंट होगा, विल बी थ्रू दी ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड असिस्टेंस विल बी प्रोवाइड फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई 2022. Later on, we have seen the 9th meeting of the State 11 Food Security Mission. Executive Committee was held, in which food security was taken care of, which motivated the farmers to sow less water demanding crops in water scarce areas. जहां जहां पे भी पानी कम है वहां पे आप ऐसे क्रॉप्स उगाओ जिसमें पानी कम लगता है. जिप्सम डिपॉजिट्स की लिस्ट याद रख लीजिएगा. इसकी फर्स्ट लाइन, ठीक है. जिप्सम माइनिंग इंक्रीज हो रही है और उसके लिए रूल्स जो है वो आपकी गवर्नमेंट ईज कर रही है. बस यही है, ठीक है. ईस्टर्न नागौर में जिप्सम मिलता है, बिल्कुल सही भरत.
Principal Secretary of the Agriculture Department, Dinesh Kumar, directed that the farmers should be encouraged to sow less water demanding crops in the areas of severe water scarcity. जहां जहां पे भी पानी कम है, इसमें स्पेसिफिकली हम राजस्थान के सारे स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं. जिनमें भी पानी कम है वहीं पे आपका जो एग्रीकल्चर है वो उन क्रॉप्स का होना चाहिए जो कम पानी कंज्यूम करते हैं. Later on, if we move ahead, the NABARD chairman launches My Pad My Right program in Leh. So this was also launched to spread awareness about the periods in the women and men, to make sanitary pads suitable to the demands of the women of different age groups. Announced to sanction 1 more lakh rupees to upgrade the machineries too. So this can be also asked in the examination. So there have been campaigns now, there have been programs now, schemes now to help the women talk easily about the periods. And also this Udan scheme, which was recently seen in news and also in the RAS 2021 paper, this can also be asked. Udan 2021, that is also associated with the periods and the sanitary pad distribution, was asked in the examination. So now the government is breaking the taboo. Also, break the taboo is yet another campaign associated with the periods news only. Okay, so all of these लाल टीका ये भी है आपका, ये सारी न्यूज जो कैंपेन्स हैं आपके किससे एसोसिएटेड है, पीरियड से एसोसिएटेड है. ठीक है, उड़ान योजना राजस्थान से, बिल्कुल सही. नाबार्ड फॉर्मेशन वाज टेकन प्लेस ऑन, नाबार्ड की फॉर्मेशन, इसका हेडक्वार्टर्स, इसके चेयरमैन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. नाबार्ड के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. Later on, if we see the Union Minister Shri Bhagwant Khuba, he launches the NSEFI's Pan India Rooftop Solar Awareness Campaign. So now the government is doing efforts to promote the solar rooftop panels. Now through the solar rooftop panels, we can see the resources we will be utilizing will be on a less number. हम उसको कम नंबर पे यूज कर पाएंगे, हमें ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा. और सोलर पैनल्स के थ्रू अगर किसी भी चीज की डिलीवरी आती है तो उसका जो सोलर रेडिएशंस आपकी जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करता है. सो शिफ्टिंग फ्रॉम दी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टू द रिन्यूएबल एनर्जी इज अ बेटर सोर्स फॉर द पीपल. नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड. Whenever we talk about upper solar, घर के ऊपर solar is super. This was the campaign title, right? Next आगे बढ़ते हैं. राजस्थान की जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो भडला सोलर पार्क आपका इंपॉर्टेंट है ही. दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट एंड इट इज लोकेटेड इन दी भडला. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं. दिस इज व्हिच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी? इट इज कर्नाटका. Later on, we have seen the Asia's largest solar power plant. This is the Rewa of Madhya Pradesh. India's first solar park, Karur Solar Park of Telangana. Next is Rubber Board's electronic trading platform MBREW to go live on 8th of June. तो ये important है, 8th June से ये MBREW भी live जाने वाला है. This will be following a simple one-time registration for the production and e-market of the rubber. Right? The rubber trade possesses an immense advantage of high-level marketing efficiency, and the trading system has not upgraded with the changing requirements of the consumer sector. MBREW मतलब कि रबर की ट्रेडिंग के लिए आपका ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है. राइट? नहीं जी मीना जी, अभी तो है ये इंग्लिश वाली क्लासेस हैं. ठीक है, बाद में कभी देखेंगे, हिंदी का अगर शुरू कर पाए तो शुरू कर देंगे. ठीक है, कमिंग टू द न्यूज हेडलाइन अगेन बैक गाइस, वी हैव सम अनदर न्यूज हेडलाइंस येट important. Indian Railways awarded by the UIC International Sustainable Railway Awards, ISRA. What was the award given to them? On the Observing World Environment Day on 5th of June, in an appropriate and befitting manner, keeping in line with the theme of this year's World Environment Day, which was theme क्या थी guys इस साल की? थीम क्या थी? गवर्नमेंट को तो अवार्ड, इंडियन रेलवे को अवार्ड क्यों मिला है? बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी. व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दिस ईयर? Please in the comment section, I would like to know the answer. Next we have is the railway is an environmental friendly means of bulk transportation. तो जिसके लिए इसको अवार्ड मिला है जीरो कार्बन एमिशन के रेफरेंसेस में. आपसे मैंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम पूछा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए. तमिलनाडु सीएम फ्लैग्स ऑफ द लग्जरी क्रूज नेम्ड एज एम्प्रेस. एम्प्रेस तमिलनाडु के सीएम ने लॉन्च किया, तो ये भी आपसे पूछ सकता है. इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 800 क्रू मेंबर्स along with 2000 passengers which will promote the tourism activities in the state of Tamil Nadu. Yes, renewable energy best use. No. I am talking about the theme. मैं आपसे पूछ रही हूं इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? भडला सोलर पार्क. आ गया? सारे क्वेश्चंस हो गए क्या भरत सॉल्व, जो सोलर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस थे? टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी पीडीएफ. ठीक है,
Chalo, now if you feel that we should end the session, I would not continue it further. I will share the PDFs and we will continue with the next class. There's no hurry. हमें हर के rush करके नहीं पढ़ना है. And I never take my classes in such manner. So we will be taking and continuing this session from tomorrow onwards. And happy Sunday, guys. कल की आपकी छुट्टी है. Only one Earth was the theme. Okay, absolutely true, Sonu. Yes. So yes, tomorrow is an off for you guys, Sunday, as it's Sunday. And on Monday at 10 a.m. we will be seeing each other on Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English. So that was all for today, guys. Have a nice day. Bye-bye. Take care. Thank you so much for joining in. And if you have any queries, you can just add it in the comment section right after the video gets in. So thank you so much, guys. Enjoy your weekend. Thank you. Bye-bye.